एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। Basically, a syndrome is a complex of symptoms and physical findings which indicate a specific condition. ब्लू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम है इन्फेंट मेथ हेमोग्लोबिन। एक कंडीशन है जिसमें बेबी का स्किन कलर ब्लू हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ लेस hemoglobin in the blood. Now, the baby affected is usually under 6 months of age. Hemoglobin, as we know, is a protein responsive for carrying oxygen around the baby, body and delivering to different cells and tissue. Now, there are various causes of blue baby syndrome. ब्लू बेबी सिंड्रोम की कॉमन कॉज है नाइट्रेट कंटामिनेटेड वाटर। नाइट्रेट कॉमनली फर्टिलाइजर्स मैन्योर से आते हैं और फार्मिंग कम्युनिटी के ड्रिंकिंग वाटर में मिलते हैं ड्यू टू द कंटामिनेशन। इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम occasionally occurs in rural areas. Babies born in developing countries with poor water supply are at risk. Young babies have underdeveloped sensitive gastrointestinal tract which convert nitrate to nitrite, leading to methemoglobin production. मेथहेमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिच होता है बट ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाता एंड दस बेबीज को ब्लू कलर देता है। दूसरा कंडीशन जो ब्लू बेबी सिंड्रोम करते हैं वो है टेट्रालॉजी ऑफ फॉलआउट, दैट इज TOF। टेट्रालॉजी ऑफ फॉलआउट फोर डिफेक्ट, दैट इज हार्ट डिफेक्ट के कॉम्बिनेशंस हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें baby has one artery instead of two to carry blood from the heart to different organs in the body, thus reducing oxygenated blood supply as oxygen rich and poor blood gets mixed. As shown here in figure 2, healthy heart के पास ये चार पार्ट्स हैं, दैट इज चार ब्लड वेसल्स है, इंफीरियर वेना कावा, aorta, pulmonary artery and vein. But in case of truncus arteriosus क्या होता है कि aorta and pulmonary artery combine हो जाती है। So aorta basically is responsible for transporting oxygenated blood to other parts of the body, whereas pulmonary artery जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ देती है। और इसमें क्या होगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट होगा टू द बॉडी, thus ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी डिक्रीजेस। और यहाँ पे जो सेप्टा है हमारा लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एंड लेफ्ट एंड राइट ऑट्रियम के बीच में वो टोटली फॉर्म नहीं हुआ है। So it's usually not present in between ventricles, left and right ventricle. So aorta carry oxygen-rich blood from heart to other parts of the body, as I said, whereas pulmonary artery carry deoxygenated blood from heart to the lungs. दूसरा है ट्राइक्यूस्पिड एंड पुल्मोनरी आर्टेरी। इसमें ट्राइक्यूस्पिड एंड पुल्मोनरी वाल्व्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। नॉर्मली इनका मेजर फंक्शंस है ब्लड को इन अ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करवाना, दैट इज टुवर्ड्स द बॉडी। नेक्स्ट डिफेक्ट इज ट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, heart is normally divided into two parts to avoid mixing of oxygenated and deoxygenated blood.
via septum. However, in this case, oxygenated and deoxygenated blood gets mixed due to defect in arterioventricular canal. That means, in example, in see here in the figure number 3, we have septa in between oxygenated and deoxygenated part. But here what happens is there is no septa, and thus the blood gets mixed here. Though we have four blood vessels here, which was absent in truncus arteriosus, but here we lack the septa, leading to the mixing of deoxygenated and oxygenated. जो दूसरा है, that is the fourth one है pulmonary hypotension. इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होता है आर्टरीज में जो लंग्स में प्रेजेंट है, बिकॉज इनका नंबर लेस है या फिर ये नैरो है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता एंड बॉडी ऑफ द बेबी टर्न्स. Another reason is methemoglobinemia, which occurs due to inhalation of nitric oxide. So then anesthetics and antibiotics. Anesthetics का example है Prilocaine and antibiotic chloramphenicol. Symptoms. Common symptoms of blue baby syndrome are blue coloration of skin around the mouth, hands, and feet, as shown in figure 1 here. आप देख सकते हैं eyes के पास, mouth के पास, nose के पास there is blue coloration. Difficult breathing, vomiting, diarrhea, lethargy, loss of consciousness, seizures are other symptoms, and this can eventually cause death. Diagnosis of blue baby syndrome is by physical examination. Blood tests, chest X-ray are done to examine lungs and hearts. Echocardiogram to check heart functionality. Oxygen saturation measurements. Additionally, the tap of water or water used in the house of the particular baby is measured for nitrate level. Nitrate level below 10 mg per liter is considered safe. Now, treatment. Treatment usually depends on cause of syndrome. If it's due to heart disease, surgery may be required. If nitrate level is high in water, the water is avoided. More severely affected infants are administered with methylene blue via injection, as it reduces methemoglobin levels in blood, allowing efficient oxygen delivery. Thank you. Like, subscribe, share, and comment.